discuss today is what? Factorization. Write down factorization. Factorization. All right. This is the new topic. Now, also the name of the chapter is factorize, but here we are going to use two theorems: remainder theorem and what theorem? Factor theorem. But at the end, we will factorize. Factorize का मतलब क्या होता है? To break something into its different parts. Like, not in addition, but in multiplication. Like if we have 2, 4. So what are the factors of 2, 4? 2, 2, 2 into 3. Multiplication में जो आते हैं वो factors होते हैं. ऐसे ही पॉलिनोमियल का ही फैक्टराइजेशन होता है. आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फैक्टराइजेशन ही तो किया था. क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपने क्या किया था? फैक्टराइजेशन. अगर स्क्वायर पॉलिनोमियल होता है, स्क्वायर वाला होता है अगर, तो उसको फैक्टराइज करने के लिए स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करते हैं. क्या करते हैं? स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म. बट यहाँ पर हमारे पास क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा, तो लिख दीजिए फैक्टराइजेशन ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल. Okay, or we can say trinomials, or we can say what? Trinomials. Factorization of cubic polynomials or trinomials. Let's say if you have the equation as 4x square plus 2 6x. Let's say this is the equation. So this is what? Quadratic. This is what polynomial? Quadratic polynomial. This is not a cubic polynomial. This is what? Quadratic. How do we solve it? By splitting the middle term. 4 to the 8. So split कर देते हैं. 8 कैसे फैक्टर जिन्हें प्लस करके 6 आ जाए. 4x plus 2x याद है आपको? इसको फिर हम कॉमन लेते हैं. 4x कॉमन, x plus 2. Here what is common? X plus 1, sorry. 2 is x plus 1. So we say okay, throughout x plus 1 is common. 4x plus 2. This is how we factorize. But here in this chapter, we will be factorizing. Our end result would be like that, means one term into the other term and into one more term. But we will be factorizing what polynomials? Cubic polynomials. Now, for factorizing cubic polynomial, we do not use what method? Splitting the middle term alone. Write down. For factorizing a cubic polynomial, we use for factorizing the cubic polynomial, we use first, write down, division method, first point, long division method, so what is it? Long division method, and then what? Factorization. Okay. Then write down factorize. Then sorry, splitting the middle term. First we'll use, what did you write? You have written for factorizing a cubic polynomial, we use division method. In bracket, write down long division method. And then next, write down. Then splitting the middle term. Then what? Splitting the middle term. Splitting the middle term. Then splitting the middle term. What term? Middle term. First division method and then splitting the middle term. Let's start. Now I'm giving you 5 steps for this chapter. I'm giving you 5 steps for this beta. 5 steps. And these 5 steps, maybe 6th also I'll give you.
will help you to finish the whole chapter. Right on step 1. These 5 steps. Step 1. What is step 1? Write fx. I'll tell you what is this fx. fx means function. Very good. Function of बहुत बढ़िया. Function of x. Step 2. Write down. Step 2 is put, yes, divisor equals to 0. Then step 3. What is step 3? Use remainder theorem. All right. Step 4. What is step 4? Use factor theorem. Don't worry, you don't have to learn these steps. Initial first 3 steps are very basic. We करते हैं, finish हो जाएगा. Use factor theorem. Then step 5 is long division method. And then step 6, last step, splitting the middle term to factorize. Now we're going to start with questions which will just use till step 3. Then we'll do questions which will use till step 4. Then we'll do questions which will use till step 5. And then finally step 6. Chaliye. Let's start. We'll be doing maybe 6, 7 questions and that's it. Topic is over. Maybe more. But major are hardly those 7, 8 questions. Maximum 7, 8. All right. Should we start the questions? All of you have copied? Okay. Here. Let's see. Question number 1, right now. Now, what is remainder theorem? Let's see first. What is remainder theorem? Because we have used the word remainder theorem, let me explain you quickly. Remainder theorem. Remainder theorem states that if a polynomial fx is divided by x minus a, then remainder is equals to fa. What does this mean? Means this remainder will help us to find the remainder. This theorem, sorry, will help us to find the remainder without actual division. Without what? Because remainder आता है कैसे? Divide कराने के बाद पहले हम क्या करते हैं? Long division method लगाते हैं. जब long division method लगा देते थे तब क्या आता है? Remainder आता है. But ये जो theorem है हमें पहले निकालना सिखा देती है remainder without using remainder theorem. And what does this mean? This means whatever function will be given fx, उसमें x की प्लेस पे आप क्या पुट कर देंगे? a. और वो आएगा कैसे a? अभी देखेंगे जब हम इसको 0 के इक्वल पुट करेंगे. Don't worry, I'll explain you. Factor theorem. Factor theorem states that if a polynomial fx is divided by x minus a and remainder is 0, how will you find the remainder? Remainder आएगा कैसे? Remainder theorem से. और वो कैसे आएगा मैं भी समझा रहा हूँ. ठीक है? ये कैसा है, इस theorem का मतलब क्या है? We'll see, don't worry. So if a polynomial fx is divided by x minus a, then remainder is equals to what? And remainder is 0, then
x minus a is called what? Factor of fx. देखिए, मान लीजिए आपके पास 12 है, कैसे प्रूव करेंगे कि 2 इसका फैक्टर है? क्योंकि जब 2 इसको डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर कितना आएगा? है ना? और रिमाइंडर आएगा कैसे? रिमाइंडर तो अभी तक आपने ऐसे सीखा था कि डिवीजन मेथड से आता है रिमाइंडर, बट आज हमें रिमाइंडर थ्योरम ने एक नया मेथड बताया रिमाइंडर निकालने का। क्या है रिमाइंडर? एफ में ए डाल देंगे। एफ क्या होता है? फंक्शन। जो भी फंक्शन दिया होगा उसमें क्या डाल देंगे हम? ए, एक्स की जगह। और वो ए कैसे आता है अभी देखते हैं, स्टेप से आ जाएगा। तो अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है तो फैक्टर है, बट मान लीजिए 5 2 10, रिमाइंडर 0 नहीं आया, रिमाइंडर कितना आ गया? 2। तो अगर 0 छोड़ के कुछ और रिमाइंडर आ रहा है तो इसका मतलब वो फैक्टर नहीं है। अगर 0 आया तो फैक्टर है। क्लियर? अंडरस्टूड? इजी? चलिए, लेट्स सी। चेक बेटा। quickly check. Write down. Question number 1. Find the remainder when x cube plus 2x square minus 2x plus 7 is divided by x minus 2. Solution. How will we do this? Yes, है ना? So first, step 1, write down fx. fx होता है बेटा function of x. देखिए, function of x कितना दिया है यहाँ पर हमें? Function of x is given as x cube plus what? 2x square minus 2x plus 7. All right? Clear? Step 2. This is step 1. Yes, step 2 होता था put the divisor equals to 0. देखिए, जो भी डिवाइड कराता है उसको 0 ही बनना चाहिए। चाहे जो देश को डिवाइड करा रहा हो, तो फैमिली डिवाइड करा रहा हो, फ्रेंडशिप डिवाइड करा रहा हो आपकी, तो क्या कर देना चाहिए आपको? क्या करना चाहिए उसको? 0। यहाँ पे कौन डिवाइड कर रहा है? x माइनस 2। जो भी डिवाइड कराएगा उसको 0 के इक्वल पुट करिए। तो x कितना आ जाएगा बताइए? 2। This was step 1 and the other one is step 2. You don't have to show कि भाई कौन सा स्टेप है, ये आपकी नॉलेज के लिए दिखा रहे हैं। स्टेप 3 क्या था बताइए? रिमाइंडर। कितना इजी है देखिए रिमाइंडर निकालना। रिमाइंडर बहुत इजी है। एफ में वो एक्स की वैल्यू पुट कर दीजिए, एफ ए। ये सेम क्वाड्रेटिक इक्वेशन फर्स्ट एक्सरसाइज जैसा फंडा है यहाँ पर। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फर्स्ट एक्सरसाइज में हमने ये तो सीखा था, अगर कोई if 2 is the solution of the equation then it will satisfy the equation। याद आ रहा है कुछ? तो जो भी देखिए, आपने एफ एक्स लिखा पहले, फंक्शन ऑफ एक्स, जो भी डिवाइजर है उसको किसके इक्वल पुट करिए? 0 के। एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2। द मोमेंट यू गेट द वैल्यू ऑफ एक्स देन हाउ डू यू फाइंड द रिमाइंडर? ये जो 2 वैल्यू आई है उधर पुट कर दीजिए। कितनी हो जाएगी देखिए वहां पर? 2 क्यूब प्लस 2x स्क्वायर, सॉरी, नॉट 2x स्क्वायर बट इट इज 2 into 2 square minus 2 into 2 plus 7, 2 to the 4 is 8 plus 2 into 2 to the 4 minus 2 to the 4 plus 7, 8 minus 4 plus 7, what will it be? 64 minus 4 plus 7, what will it be? 67। आ गया, खत्म हो गया आंसर। वाह वाह, वेरी गुड। क्या कैलकुलेशन की है देखिए, लाजवाब। इतनी बढ़िया कैलकुलेशन की है। सॉरी, it should be 8 plus 8 minus 4 plus 7, so what will it be? 16, and this is plus 3, so answer is 90। That's it। So इसी स्टेप पे रुक गए बेटा हम। क्यों रुक गए हम इसी स्टेप पे? Because question says find only the remainder। All you've understood? So this is one type of question। Sometimes instead of x minus 2 they can even say 2x plus 1 is a divisor। So if this will be the divisor, you'll put this equals to 0, 2x will be minus 1, so x will be what? Minus 1 by 2।
Should we move to the second type of question? All right, write down quickly. Let's see. Question 2. Write down. Using remainder theorem, find the value of A if x cube plus 5x square minus ax plus 6 leaves a remainder 2a when divided by 2a when divided by x minus 1 when divided by x minus 1. So this is the application of what? This is the application of what theorem? रिमाइंडर थ्योरम का एप्लीकेशन देख रहे हैं. एप्लीकेशन मतलब वो तो हमने सिर्फ अप्लाई किया था, ऐसे x कैसे निकलेगा बेटा. सॉल्यूशन. Let's see. Using remainder theorem, the moment you get this word remainder theorem, factorize, you will get to notice from factorization. So you have to start from step 1 to 6. हो सकता है पहले खत्म हो जाए क्वेश्चन, बट 1 to 6 तो शुरू करिए. स्टेप 1 क्या होता है? राइट fx जो फंक्शन दिया है बेटा x का, क्या दिया है? x क्यूब 5x स्क्वायर माइनस ax प्लस 6. क्लियर. स्टेप 2 क्या होता है? स्टेप 2 पुट डिवाइजर. कौन है यहाँ पे डिवाइजर? उसको 0 पुट कर दीजिए. Yes, that's right. X is equals to 1. Now step 3. Let's try step 3. What is step 3? Step 3 is remainder by using remainder theorem. रिमाइंडर थ्योरम ने हमारे लिए चीजें आसान करी हैं. रिमाइंडर वैसे लॉन्ग डिवीजन मेथड के बाद आता है, बट यहाँ पर हमारा रिमाइंडर इजीली आ जाता है. कैसे आ जाता है बताइए? x की जो भी वैल्यू आई है उसे पुट कर दीजिए. दिस चैप्टर विल श्योरली गिव यू 2 क्वेश्चंस इन बोर्ड्स. Surely. 1 plus 5 minus a plus 6. What will it be? 12 minus a. But in the question, it is given that what? Remainder is 2a. So if remainder is 2a, yes. So it will be 2a plus a is equals to 12. 3a is equals to 12. So you'll say, sir, a is equals to 4. Is that clear? Understood or not? Any doubt? No? Quickly copy then. So these are the 2 types of questions from what theorem? Remainder theorem. Now we have similar questions from factor theorem also. Okay, I'll do one more question of remainder theorem in which 2 polynomial will be given. And then you have to equate them. Let's see. Let's write down this question. Question number. This is question 4 for today. 3rd. Okay. Write down. The polynomials ax cube plus 3x square minus 3 and 2x cube minus 5x plus a, both the polynomials, when divided by, both are being divided by x minus 4, leaves the remainder, leave the remainder होगा बेटा, leave the remainder r1 and r2 respectively. पहला वाला r1 है, दूसरे वाले का r2 है. If 2r1 is equals to r2, then find the value of a. Let's see. Let's find the value of a. Solution.
Step 1 says what? That put right, yes, right, fx. So we have two fx. First function is given as ax cube plus 3x square minus 3. Now I am making a column. I divided my page. दूसरा जो फंक्शन है बेटा उसे fx नहीं बोलेगा. fx तो पहला फंक्शन हो गया. दूसरे फंक्शन को हम बोलेंगे gx. क्या बोलेंगे? gx. Remember, in case if we'll have the third one, what will be its name? fgh. So we will call it hx. What will we call it? hx. fx, gx, and then hx. Clear? Any problem? Now, we'll have put x minus 4 equals to 0. Why? Why x minus 4 equals to 0? Why x minus 4 equals to 0? Because step 2, है ना? Step 1 and then step 2 बेटा. So we'll have put even here. आप बोलेंगे सर दोनों तरफ आप क्यों पुट कर रहे हैं बेटा? क्योंकि दोनों को डिवाइड करने वाला कौन है? x minus 4. क्वेश्चन में क्लियरली लिखा है. Sometimes you will have one polynomial but two divisors. पॉलिनोमियल तो आपके पास एक ही होगा बट डिवाइड करने वाले कितने होंगे? दो. ठीक है? इजी. चलिए आगे देखते हैं. नाउ हाउ विल वी फाइंड द रिमाइंडर? स्टेप 3, रिमाइंडर. रिमाइंडर शुड बी f को ऐसे पुट कर दीजिए a into 4 cube, x की वैल्यू जो आएगी 3 into 4 square minus 3. 4 4 is 16, 4 is 64a. 16 into 3 is how much? 16 into 3, 3 6 is 18. 48 minus 3. 64a plus 45. This is R1, this is R1. Now let's find the remainder even here. 2 into 4 cube minus 5 into 4 plus a. What will it be? 2 into 64 minus 5 4 is 20 plus a. 128. Yes or no? Minus 20. All of you getting the same answer? R2. 108 plus a. Is it fine? Check again, beta. Clear? Should you move to the next question? Means next part. Now, it is given in the question that 2R1 is equals to R2. So 2 times 64a plus 45, a plus 45 is equals to how much? 108 plus a. What will it be? 128a plus 90 is equals to 108 plus a. 128a minus a is equals to 108 minus 90. What will it be? 127a equals to 18. A is 118 upon 127. All right. Although it may appear that the answer is not appropriate, but it's correct, beta. Understood? Chale beta, is this type clear to you? Now let's do the questions based on factor theorem. Let us do the questions based on factor theorem. Factor theorem questions are almost like these only. Copy, no problem. All right. Let's do. So we have done all the three types of questions based on
remainder theorem. Let's do factor theorem, beta. Then we'll combine them. Let's see. Question number 4 for today. Right now. By factor theorem, please do not get confused. Whether it says factor theorem or it says remainder theorem, it means the same thing. The only difference between factor theorem and remainder theorem is in factor theorem, remainder will come 0. But remainder आप remainder theorem से निकालेंगे. और अगर remainder 0 आ गया तो बोलेंगे कि ये इसका क्या है factor. देखिएगा. By factor theorem, show what? X plus 3 is a factor of 2x square plus 5x minus 3. Okay. Let's see how to do that. Solution by factor theorem. Step 1, write fx. Let's write down fx. 2x square plus 5x minus 3. Step 2, put divisor equals to 0. Divisor 0 हो गया. X कितना आगे बताइए? Minus 3. Step 3, find what? Remainder. बेटा ये दोनों तीनों स्टेप्स तो हमने किए रेगुलरली अभी. ये तीनों स्टेप्स सीखे अभी हमने, इसलिए आधे घंटे से यही कर रहे हैं. स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3. रिमाइंडर कैसा आएगा? इसको इधर पुट कर दीजिए. What will it be? It will be 2 into minus 3 square plus 5 into minus 3 minus 3. 2 into 3 3 is 9 minus 15 minus 3. So it is 18 minus 18. अरे वाह, देखिए अगर रिमाइंडर 0 आता है, I'll show you. Check. This is step 1. This is step 2. This is step 3. And step 4 is just a line. Step 4 is nothing but just a, क्या है वो लाइन? देखिए. हाँ, अगर रिमाइंडर 0 आया है, आप बोलेंगे therefore by what theorem? By factor theorem, we can say that x plus 3, very good, is a factor of fx. That's it. Now, even here we will get questions based on what? Finding A and B. Chale. Should you move to that question? Or should I give you one tricky question? इसका एक जो एग्जाम में आता है जनरली. डिफिकल्ट वाला दे? डिफिकल्ट तो नहीं है, इजी है थोड़ा सा. चलिए करते हैं. Should we start? Right now. Without actual division. Here we found the remainder 0 without actual what? Division. नहीं तो जनरली किससे आता है ये? डिविजन से. हमने बिना डिविजन के निकाला रिमाइंडर. ये तो रिमाइंडर थ्योरम है कि हम डिवाइड करे बिना क्या निकाल रहे हैं? रिमाइंडर. राइट डाउन. So the question starts like question number 5 for today. Without actual division, prove that x4 plus 2x cube minus 2x square plus 2x minus 3 is exactly divisible by x square plus 2x minus 3. Is exactly divisible by x square plus 2x minus 3. Is that clear? Understood or not? Let's start. No problem. Solution. What is step 1? What is step 1? Yes, write fx. What is fx? fx जो divide होता है 2x cube minus 2x square plus 2x minus 3. And then step 2, put what? Divisor equals to 0. This is the problem. This time divisor is a quadratic equation. What is it? A quadratic equation. How will we divide a quadratic equation? हाँ, अब देखिए अगर आप इसको इक्वल टू 0 कर दिया तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया. कैसे करेंगे इसे? स्प्लिट इन द मिडिल टर्म.
Those factors of 3 whose minus is 2. 3 ones are 3x minus 1x. All of you know how to factorize. So x is common. X plus 3 minus 1 is common. X plus 3 equals to 0. So we will have x plus 3 again common. X minus 1. All of you are expert in this, right? ये तो आपको अच्छे से आता है. So we are getting x plus 3, x minus 1. So whenever we get anything like this, x plus 3, x minus 1, what do we do then? First we will put x plus 3 equals to 0, and then we'll put x minus 1 equals to 0. So here we'll get x equals to minus 3, all right? And here we'll get x equals to 1. This is nothing but what step? Step 2. अभी तक हमारा step 2 जो होता था वो एक लाइन होती थी. x minus 1 equal to 0 तो x equal to 1 आ जाता था. आज थोड़ा सा डिफरेंट है. क्या है बताइए? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को 0 की पुट कर रहे हैं. So you are getting two values of x, no problem. दोनों जगह रिमाइंडर निकालते हैं. Step 3. बताइए what is the remainder? हमें पता है रिमाइंडर आता है, ये जो वैल्यू होती है इसको इससे पुट कर fx में कितना हो जाएगा बेटा? -3 की पावर 4 प्लस 2 इंटू -3 का क्यूब माइनस 2 इंटू -3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू -3 एंड -3 करते. ये 81 हो गया. प्लस 2 इंटू -27 -2 इंटू 9 प्लस का -6 -3. So it's coming as 81 minus 54 minus 18 minus 9. तो कट गया पूरा. 0 आ रहा है. Because that is, ये जो पूरा है ये वाला ये 81 होता है. 81 minus 81 will be how much? That's right, 0. Remainder 0 आ गया. Let's find the remainder even in the other case. Remainder fx से पुट करते हैं ना. 1 की पावर 4 प्लस 2 इंटू 1 क्यूब minus 2 into 1 square plus 2 into 1 minus 3. Minus 3. So it will be 1 plus 2 minus 2 plus 2 minus 3. Plus 2 minus 2 will get cut. 3 minus 3. What is 3 minus 3? 0. 3 minus 3 is 0. So this means both are factors. Therefore, x plus 3 and x minus 1 are both what? Factors of fx. बेटा दोनों फैक्टर्स हो गए fx के. अगर दोनों फैक्टर्स हो गए तो उनका प्रोडक्ट भी फैक्टर होगा. Is also what? A factor of fx. Is that clear? और दोनों का मल्टीप्लाई अगर फैक्टर होगा तो मल्टीप्लाई करा के कितना आएगा इनको देख लीजिए. यहाँ किया था हमने. मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 2x minus 3 is also a factor of fx. कहने की बात यह है कि अगर 12 को 2 डिवाइड कर सकता है टोटली, 12 को 3 डिवाइड कर सकता है टोटली, तो इन दोनों का प्रोडक्ट भी डिवाइड कर सकता है उसे 12. ठीक है? अंडरस्टूड? चलिए. सो नाउ these questions are taking us till step number what? 4. कि अगर रिमाइंडर 0 है तो वो उसके क्या है? फैक्टर. स्टेप 5 होता है लॉन्ग डिवीजन मेथड. चलिए उसको भी करते हैं. Copy this much. Let's do one more question of this type. I'll not do that whole question, but I'm showing you beta how it's done. Let's see question number 6. Question number 6 is, write down quickly. Question number 6 for today. X minus 2 is a factor of x cube plus ax square plus bx plus 6. When this expression is divided by x minus 3, it leaves the remainder 3. Find the values of a,
and B. If you'll understand this question, then this topic is 80% over. 80% over, beta. All right. Let's see. Solution. Step 1. देखिए fx तो एक ही है बेटा, एक्स क्यूब, बट डिवाइजर कितने हैं पता है आपको? कितने नंबर डिवाइड कर रहे हैं? एक तो x -2 डिवाइड कर रहा है, x -2 इज अ फैक्टर ऑफ दिस, एंड व्हेन द एक्सप्रेशन ये भी डिवाइड कर रहे हैं, तो दो केस होने वाले। तो पहले हम शुरुआत करते हैं केस 1 से। पहले केस से हमने केस 1 के लिए fx लिखा, और डिवाइजर कितना है केस 1 में? x -2, x कितना हो जाएगा बेटा? 2। पक्का? स्टेप 1 हो गया, स्टेप 2 हो गया। अब क्या निकालते हैं हम स्टेप 3 में? रिमाइंडर। रिमाइंडर आता है, वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं, सुबह से ही कर रहे हैं आज। a into 2 square plus b into 2 plus 6, 2 to the 4 to the 8, 4a plus 2b plus 6. We can write it as 4a plus 2b, 4 plus 6 is 14. Now x minus 2 is a factor. What does this mean? वो उसका फैक्टर है, अगर वो उसका फैक्टर है, remainder 0. That's right, remainder will be 0. And if remainder is 0, now check, whole equation is going by 2. 2 zeros are 0, 2 twos are 4, 2 ones are 2, 2 sevens are 14. So this is the first equation, 2a plus b plus 7 equals to 0. You may use elimination method or substitution method. Substitution लिखना है तो लीजिए, 2a minus 7 आ गया ऐसे। फर्स्ट इक्वेशन, केस 1 से हमारे पास क्या आ गई बेटा? फर्स्ट इक्वेशन। शुड वी स्टार्ट केस 2? 0 कैसे आया? 0 इसलिए आया क्योंकि जो x minus 2 है वो क्या है? फैक्टर है। तो अगर x minus 2 फैक्टर है, तो जब भी वो इसको डिवाइड कराएगा तो रिमाइंडर कितना आएगा? 0। तो रिमाइंडर 0 तो हो गया फैक्टर थ्योरम की वजह से, क्योंकि वो उसका फैक्टर है। और ये जो रिमाइंडर आया, ये रिमाइंडर थ्योरम से आया। रिमाइंडर थ्योरम कहती है कि रिमाइंडर आप सीधा निकाल सकते हैं, बस जो वैल्यू आई है उसे एफएक्स में क्या कर दीजिए? पुट कर दीजिए। इज दैट क्लियर? लेट्स सी केस 2, दूसरा डिवाइजर। केस 2 में देखिए एफएक्स तो वही रहेगा, कितना है बताइए? एफएक्स एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 6. दिस इज व्हाट? एफएक्स। व्हाट इज इट? स्टेप 2, पुट, व्हाट डू वी पुट? डिवाइजर इक्वल्स टू 0। डिवाइजर कौन सा है बेटा? दूसरा वाला। कौन है डिवाइजर? x minus 3। इसको 0 पुट किया तो x कितना आएगा? 3. So what will be the remainder then? Remainder. What will be the remainder? इसको से पुट कर दीजिए, 3 cube plus a into 3 square plus b into 3 plus 6. 3 3 is 9, 3 is 27 plus 9a plus 3b plus 6. So what will it be? 9a plus 3b plus 33. And what is the remainder? This time remainder will not be 0. Why did we say last time that remainder is 0? क्यों पुट किया था बेटा हमने रिमाइंडर को 0? हाँ, क्योंकि लास्ट टाइम वो फैक्टर था, तो रिमाइंडर कितना हुआ था? इस बार रिमाइंडर 0 नहीं है, इस बार रिमाइंडर कितना लिखा है? तो विल पुट द रिमाइंडर एज 3. शिफ्ट दिस साइड, 0. 9a plus 3b is equals to what? Sorry, plus 33 minus 3 हो जाएगा बेटा। ये तो कितना आ रहा है ये? 9a plus 3b plus 30. You can even write 0 on the right side. Whole equation is divided by 3. What will it be? 3a plus b plus 10. Beta, now can you do it on your own? Just substitute the value of b और a और b आ जाएगा। Clear? Understood? चलिए, now let's do question number 7 and question number 8. 2 more questions and then this topic is over. All right? So this is one single class for this whole topic, one shot for this.
So within 45 minutes or something, we have closed this. Maybe 1 hour. Within 1 hour, we have closed this whole topic. Topic quickly. All right, beta. Let's do the second last type of question. Write down. Question number what? Question number 7. Write down. Show that 2x plus 7 is a factor of, let's see what, 2x cubed plus 5x square minus 11x minus 14. Hence, factorize the expression using factor theorem. कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सर फैक्टर थ्योरम लिखा है तो क्या करेंगे, अगर रिमाइंडर में कुछ और करेंगे? नहीं भाई, आपको यूनिवर्सल 7 स्टेप्स दिए हैं, वो 7 स्टेप्स यूज करेंगे। 6 स्टेप्स, 7th वाला स्टेप यूज नहीं होता है 10th में। 6 स्टेप्स, उसी से फिनिश हो जाएगा। चलिए लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन। स्टेप 1, व्हाट इज स्टेप 1? राइट fx 2x cube plus 5x square minus 11x minus 14. Step 2, what is step 2? Put divisor equals to 0. So 2x is minus 7, x is minus 7 by 2. Step 3, what is step 3? Remainder theorem. Find the remainder. That's it. Step 1 ये होता था, step 2 ये होता है, step 3 ये होता है। इसको से पुट कर दीजिए, कितना होगा? 2 into minus 7 by 2 whole cube plus 5 into minus 7 by 2 whole square minus 11 into minus 7 by 2 minus 14. This is 2 cube is 8. 7 cube is what? Minus 7 cube is what? 343. That's right. Plus 5 into 49 upon 4 plus 77 by 2 minus 14. Let's solve. 2 4s are 8. Let's take LCM बेटा। सबका LCM 4 आएगा, minus 14 छोड़ देते हैं, चलिए। Minus 343 will be as it is. You know how to take LCM. So then 5 into 49 will be how much beta? 5 9s are 45. 4 carry. 5 4s are 20. 245. 2 how much is 4? 2 2s are 4. So we have to multiply 2 to it. 2 7 14. Let's take LCM with this also. इसको भी कुछ छोड़ रहे हैं, LCM ले लेते हैं पूरे का। 2 7 14 2 7 14 154. Minus into 4 हो जाएगा, 4 4 is 16, 4 1 is 4 5 56. Clear? Understood or not? Subtract these two beta. It will be 5 minus 3 13 is 8, 98 of minus plus this is also 98 upon 4, 98 minus 98 is 0 0. बताइए, अगर रिमाइंडर 0 आ जाता है तो जो डिवाइजर है वो क्या होगा? फैक्टर होगा। अगर रिमाइंडर 0 आ जाता है तो डिवाइजर क्या होगा? फैक्टर होगा। क्या होगा डिवाइजर? फैक्टर। So we'll say therefore, this is step 4 beta. We'll say therefore 2x plus 7 is a what? Factor of fx, that is 2x cube plus 5x square minus 11x minus 14. ये इसका फैक्टर हो गया। स्टेप 1 प्रूव हो गया आंसर। कौन से स्टेप में पहुंचे? सॉरी, स्टेप 4 तक पहुंच गए। अब हम कौन से स्टेप तक पहुंच गए बेटा? स्टेप 4। Is that clear to all of you? Step 1, step 2, step 3 अच्छे से समझ आ रहा है आपको? हौसल? Clear? Step 1, star, star, star. Now then, let's see. After this, the main step, step 5, जो कि हमने अभी तक नहीं किया है, पहली बार कर रहे हैं हम। बहुत easy है। Factorizing by long division method. What division method?
क्यूबिक पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन होता ही इससे है। इसी से ही होता है वो लॉन्ग डिवीजन मेथड का। कैसे होगा देखिए जल्दी से। लेट्स सी। For this you just have to remember DMC, these three letters. DMC. What is D? Divide. ठीक है। M for multiply. C for change sign. This is how we divide. DMC. What? DMC. Divide what? Divide the first number of this by the first term of this. But remember, they should be arranged in ascending order of the powers of x. Arranged वो वैसे होनी चाहिए, x cube फिर ऐसे x. All right. So this will be what? 2x cube. Divide 2x cube by 2x. What will it be? इसको ही डिवाइड करेगा बेटा, क्या आएगा बताइए, रफ में कर लीजिए। 2x क्यूब को अगर 2x डिवाइड करता है कितना आएगा? 2 से 2 कट गया, एक्स स्क्वायर यहाँ लिख दीजिए। d हो गया। d के बाद क्या होगा? मल्टीप्लाई। ये नंबर इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, कराइए। एक्स स्क्वायर इंटू 2x क्यूब 7x स्क्वायर। उसके बाद क्या है? स्टेप 3। स्टेप 2 तो हो गया, स्टेप 3 चेंज साइन। नीचे वाले सबके साइन चेंज कर दीजिए। और 100% केसेस में कटेगा, 90% केसेस में नहीं, 100% केसेस में पहला नंबर कट जाएगा। कभी कभी ये दोनों कट जाते हैं तो टेंशन नहीं लेनी, दोनों उतार देंगे ऐसे नीचे। कभी कभी ऐसा होता है कि दोनों नंबर्स कट जाते हैं, यहाँ पे नहीं कट रहे हैं तो टेंशन नहीं लेना है। 5x स्क्वायर में से -7x स्क्वायर हुआ तो -2x स्क्वायर, और नेक्स्ट वाला नंबर कॉपी कर दीजिए। अब फिर से डीएमसी। व्हाट इज डीएमसी? डिवाइड मल्टीप्लाई चेंज साइन। कैसे? पहले नंबर को ये पहला डिवाइड करेगा, है ना। -2x स्क्वायर को 2x डिवाइड करेगा, कितना रही है? -x, बिल्कुल सही, वो यहाँ लिख देंगे। डी के बाद क्या होगा बताइए? डी तो कर दिया, अब क्या होगा? मल्टीप्लाई। ये इससे और इससे मल्टीप्लाई होगा, कितना आएगा बताइए? -2x स्क्वायर -7x। देन स्टेप 3 इज व्हाट? चेंज द साइन, प्लस प्लस हो गया। 100% ही कटेगा। आई एम नॉट सेइंग 99, 99.99 भी नहीं बोल रहे, 100% कटेगा, नहीं तो गलत हो रहा है। ये हो जाएगा -4x, सुनो, -14। now again we'll have what? DMC. what? डिवाइड करना है, फर्स्ट नंबर को फर्स्ट नंबर डिवाइड करेगा, कितना आएगा बताइए? -4x को अब 2x डिवाइड करेगा, -2, -2 इधर आ जाएगा। देन यू हैव टू मल्टीप्लाई दिस टू दिस, दिस टू दिस। d हो गया, m कर रहे थे, मल्टीप्लाई कराएंगे तो -4x -14। देन स्टेप 3 चेंज साइन, ये प्लस और ये प्लस, माइनस का 4 माइनस का 14 कैंसिल, 0 आ गया। रिमाइंडर कितना आ गया? 0। So this remainder we have shown by using what method? Long division. अभी तक हम रिमाइंडर 0 किससे दिखा रहे थे? रिमाइंडर थ्योरम से। फिनिश्ड है क्वेश्चन बेटा। चलिए देख लेते हैं लास्ट कौन सा स्टेप था लॉन्ग डिवीजन मेथड? स्टेप 5। स्टेप 6 हमें बताता है कि फैक्टराइज कैसे करना है। जल्दी से कर लें, देन आई विल गिव यू टाइम टू कॉपी। लेट्स सी। ये जो अंदर वाला नंबर होता है बेटा, डिविडेंड बोलते हैं इसे, क्या बोलते हैं? Basic rule of math says that this dividend is equal to divisor, जो कि आपका कितना है? 2x plus 7 into quotient। quotient मतलब जो आंसर है x square minus x minus 2। तो आ रहा है 2x plus 7। How will you factorize this? By splitting the middle term। 2 के ऐसे फैक्टर्स जिनको माइनस करके 1 आ जाए, 2 1 2, 2x minus 1x। Yes or no? So we'll have 2x plus 7 and then what? x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1x। बस ये आंसर आ गया। आगे वाले नंबर को ऐसे चलाते रहिए। अंदर स्प्लिट इन द मिडिल टर्म, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला, x कॉमन, x माइनस 2 प्लस 1 कॉमन, x माइनस 2। अब इन दोनों टर्म में से क्या कॉमन आ रहा है बाहर? x माइनस 2 कॉमन आ जाएगा। अब ब्रैकेट के अंदर क्या बच जाएगा? x, ये तो कॉमन चला गया,
ये भी चला गया तो +1. दिस इज योर आंसर. चलिए, लेट्स डू द लास्ट क्वेश्चन बेटा of this last type of question. Question number what? What is the number? Question number beta? Question number क्या हो गए? 8, right? अब chapter over है. Let's see. 8 questions. Question says, using remainder theorem. Using what theorem? Remainder theorem. Factorize 2x cube plus x square minus 13x plus 6. Finished. Question over. So in this type of question, check. In this type of question, fx is given. फैक्टराइज करना है तो लास्ट स्टेप तक जाना पड़ेगा पूरा डिवीजन मेथड के बाद जो भी किया हमने पिछले क्वेश्चन में. आगे नहीं बढ़ पा रहा क्वेश्चन क्योंकि क्या मिसिंग है यहाँ पर? डिवाइजर. ये लास्ट क्वेश्चन है बेटा. डिवाइजर गिवन ही नहीं है. देखिए, अगर डिवाइजर गिवन नहीं है तो इसका मतलब आपको रफ में जाके ये चेक करना पड़ेगा डिवाइजर कौन है. और आपको लास्ट में 16 दिया है ना. सॉरी, दिस इज नॉट 16, दिस इज 6. करेक्ट कर लीजिए. ये 6 है. लास्ट का नंबर 6 है तो 6 के फैक्टर होते हैं 1 - 1. 2 से भी डिवाइड होता है, 3 से भी डिवाइड होता है और 6 से भी होता है. इनमें से कोई एक है इसका. अब टेंशन नहीं लीजिए कि आपको इतने सारे चेक करने. 1 से शुरू करते हैं. x को अगर मैं 1 पुट करूं बेटा उसमें, किसमें? इसमें 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 13x प्लस 16 में अगर मैं x को 1 पुट करूं तो जाएगा 2 × 1 क्यूब प्लस 1 स्क्वायर माइनस 13 × 1 प्लस 16. व्हाट विल इट बी? 2 + 1 - 13 + 6. 0 नहीं आ रहा, गलत है. x को -1 पुट करते हैं. वैसे आप समझ जाएंगे कि -1 से भी नहीं आएगा ये. -1 का स्क्वायर प्लस 13 × -1. When you'll practice, no, you'll be able to find the answer directly. Don't worry. ये नहीं आ रहा है. देखिए साफ साफ -2 + 1 + 13 कहाँ होगा बेटा? नहीं हो रहा है भी, गलत है. है ना? Let's try with 2 then. इसको इरेज करते हैं और 2 से ट्राई करते हैं. Let's see if we get the answer. x को अगर 2 पुट करते हैं तो आएगा 2 का क्यूब आ गया. देखिए 2 का स्क्वायर -13 × 2 + 16, सॉरी 6. 2 to the 4 to 16 plus 4 minus 26 plus 6 आ गया. कौन सी वैल्यू पे आया? सो अगर x 2 पे आया है तो बताइए पुट क्या करेंगे आप? x - 2 = 0. इज दैट क्लियर? x - 2 0 है तो x कितना हो जाएगा? बस खत्म कहानी. अब पूरी वही प्रोग्राम शुरू हो जाएगा. रिमाइंडर. You will not say, sir, I have already shown the remainder in rough and it is coming 0. So do I need to show it again here in fair? I'll say yes, because rough work will not be checked. 16 हो जाएगा. So this is 20 - 20, 0. Now it's same as the previous question. Is that clear? ये रिमाइंडर होगा. हम फैक्टर थ्योरम से लेंगे, therefore it's the factor, then long division method DMC और फिर फैक्टराइज कर देंगे. Is this clear? We also get one more type of question beta in this, where fx would be given as x cube minus 13x minus 12. बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें. बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होइएगा. इसमें अगर मैं आपसे रिमाइंडर पूछूं, रिमाइंडर जब मैं आपसे पूछूं, सॉरी डिवाइजर, तो देखिएगा इस क्वेश्चन में पुट क्लियरली x = -1 पे 0 हो रहा है. स्टेप 1 राइट fx, ये fx होगा इस क्वेश्चन में. स्टेप 2 पुट डिवाइजर = 0, मतलब x + 1 0 लेना पड़ेगा तो x - 1 आएगा. और रिमाइंडर देखिए कितना आएगा यहाँ पर. रिमाइंडर विल बी पुट इट हियर -1 क्यूब -13 × -1 -12 -1 + 13 -12 -1 + 1 0 आ गया रिमाइंडर. अगर रिमाइंडर 0 आए तो आप क्या बोलेंगे? therefore x + 1 is a factor of fx. बेटा आप लोग समझ पा रहे हैं वो क्या रहे? ये वाला क्वेश्चन मैंने सॉल्व नहीं किया पूरा, आपको ले जाना है आगे. एंड दिस इज अ न्यू क्वेश्चन.
In this new question, when you'll start dividing, जब आप इसको डिवाइड कराना शुरू करेंगे नए क्वेश्चन में, when you'll start dividing beta, then when you'll start dividing, then जब आप इसे डिवाइड कराएंगे तो देखिए क्या होगा, दिक्कत हो जाएगी। क्या दिक्कत हो जाएगी? x+1 जब डिवाइड करेगा ना इसको x³ -13x, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे क्योंकि यहाँ पे क्या नहीं आ रहा है। तो कोई दिक्कत नहीं, उसे 0x² कर दीजिएगा और डिवाइड जब आप कराएंगे तो x² आएगा। फर्स्ट नंबर को फर्स्ट डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, कितना रहे देखिए x³ + x², चेंज साइन, ये कैंसिल हो गया। 0x² में से माइनस हुआ तो -x², एंड देन इट विल कंटिन्यू। कैसे? -x आ रहा है, -x², -x, फिर चेंज साइन, डीएमसी लगाइएगा। वीडियो बैक करके देख लीजिए एक बार क्या मेथड है। ये कॉमन हो गया, ये बार बार कॉपी होता है। -12, -12x, -12, चेंज साइन, लास्ट स्टेप क्या है तो 0 आ गया। अब क्या आता है लास्ट स्टेप में, क्या लिखते हैं बेटा? जो ये अंदर x³ है प्लस 0x² रहने दीजिए, -13x -12, ये होगा बेटा डिवाइजर इनटू कोशेंट। और इस क्वेश्चन को कैसे फैक्टराइज करेंगे आप बताइए? इसे कैसे फैक्टराइज करते हैं? बाय splitting the middle term. So that's it for this topic. We have completed class 10th factorization. Thank you.